thanks for the introduction, of course. And then second is, Lubna, she already gave a detailed, kind of, well, not very detailed, but of course a brief topics that I was going to share, which is how to make a right decision, career counseling. Of course, the best part was when she said, she quoted someone, sorry, I didn't really remember the name, that, you have to make a plan. And, if you have a goal, the plan comes, handy. If you don't, it's just a wish list. And that is a wish list that we want you not to just get stuck at. You have to make the move. And one of the best things that you can do is, of course, start as early, number one, and then systematically. So आपको screen नजर आ रही है? Yes. Okay, perfect. So मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है? राइट लिखने की ज़रूरत नहीं है. It's a recorded session. You can go back, watch it as many times. और अगर मेरे साथ शेयर किया, I can put it on my YouTube channel. You can watch it from there too. So notes ना लें, सिर्फ सुनते रहें. जहाँ आपको समझ में ना आए, वहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं. You can chat में या toward the end आप रख सकते हैं. Again, slides बहुत ज़्यादा है मेरे पास. I mean, I can show you so many different topics. लेकिन मेन फोकस आज ही होगा. और किसी भी प्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम आई गिव टू एनी फोरम इज जस्ट टू गिव यू फूड ऑफ थॉट्स. आपके पास कुछ स्टार्ट करने का वो आ जाएगा, एक बेसिक पॉइंट्स. और वो ये कि आपने आगे पढ़ना है, आपने जॉब करनी है. और अगर आपने आगे पढ़ना है तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इज अ मास्टर्स और पीएचडी. आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? तो अगर आपने कोई गोल रखते हैं, गोल के मुताबिक फिर आप प्लान करेंगे और उस प्लानिंग में फिर आप कोशिश करेंगे किस तरह से आपकी एप्लीकेशन, आपका प्रोफाइल उसी लिहाज से शेप हो. आप वैसे ही बगैर सोचे समझे अगर आप अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना चाहें, उसको मजबूत करना चाहें, चीज़ें सीखना चाहें और वो बाद में आपके काम ना आए, तो ये अच्छी प्लानिंग नहीं है. तो हर जगह हाथ पैर मारने से अच्छा है और ये हवाई फायर करने से, तीर चलाने से बेहतर है कि आप सही तरह से प्लानिंग करें. और वो प्लानिंग होगी कैसे, इस बात पे मुनहसिर होगी कि आप आगे क्या करना चाहते हैं. ठीक है. सो योर लॉन्ग टर्म गोल्स डिक्टेट्स आपने प्लानिंग क्या करनी है. ठीक है, कि आपने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है. तो ये मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया. मुझे ये चीज़ें मैं इसलिए भी दिखाता हूँ खासतौर पे इन तरह के टॉक में कि वेयर आई डू, वेयर आई एम एंड हाउ डिड आई ऑफ कोर्स प्लान फॉर इट. सो पिक्चर जो आप देख रहे हैं, फोटो, ये एक ब्रेन पिक्चर है, ब्रेन डेटा है, ऑफ कोर्स नॉट जस्ट अ फोटो. और in our brain there are white matters, tracks होते हैं जो नर्वस सिस्टम के होते हैं. और अगर आप देखें तो ग्रीन जो है, हरा, ये it goes from front to back. So this is the front of your brain, this is the back, and this is the spinal cord. So the green goes front back, blue goes left right. अगर आप ये रेड देखें, ऑफ कोर्स डिफरेंट चेंज करेगा कलर बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन क्या है उनकी. ठीक है, एंगल क्या है. एंड ये पिक्चर बनाने में ये किसी एक शख्स का काम नहीं है. इसमें बायोमेडिकल इंजीनियर, फिजिशियन, फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामर, you name it. और ऐसे लोग जिनके पास ऑफ कोर्स एक्सपर्टीज है, एंड देन दे बिल्ड फर्दर एक्सपर्टीज टू मेक डिफरेंट मॉडल्स. ठीक है. एंड वो मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, वो फिजिक्स रिलेटेड मॉडल्स होते हैं. और ये सब चीजें कैसे आती हैं? व्हेन यू ऑफ कोर्स एक्वायर एक्सपर्टीज. ठीक है. अब आप ये सोचेंगे कि आपको ये रास्ता कैसे मालूम होगा. दिस इज व्हाट वी विल ट्राई टू टीच यू. विल नॉट शो यू दिस, विल शो यू हाउ टू फाइंड इट. देखें, एक कहावत है कि अगर आप किसी को मछली दें, कहते हैं रादर देन गिव फिश, गिव देम हाउ टू फिश. यानी अगर आप किसी को ये मछेरे को ये सिखा दें कि मछेरे को नहीं, अगर मछेरा किसी और को ये सिखाए कि मछलियां कैसे पकड़ते हैं, तो आप सारी उम्र उसको इंडिपेंडेंट कर देते हैं. वो सारी उम्र फिर अपने आप के लिए मछलियां पकड़ के और अपना रोजगार शुरू कर सकता है. और आप उसको एक मछली दे दें तो वो एक दिन खा लेगा, अगले दिन फिर आपके पास आएगा. तो दे वुड बी डिपेंडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ. द मेन पर्पस ऑफ दिस टॉक इज टू टीच यू हाउ टू प्लान ऑन योर ओन, and then further develop your own skills, your own career and everything. ठीक है. So मैंने अपना करियर स्टार्ट किया आफ्टर पीएचडी या ड्यूरिंग पीएचडी. मैं सिर्फ न्यूरो इमेजिंग करता था, ब्रेन इमेजिंग. So it's a brain picture. Of course, this is the skull, the nose, eyes, and then of course rest of the structure.
अब मैं करता हूँ whole body, so this is not, so it starts from here, now I do the whole body including limbs, organs, and of course different structure as well and different techniques. So you develop your skill throughout your life. ये एक दफा का नहीं होता कि आपने PhD कर ली, finish. PhD is not the end, by the way. This is probably the start of what you're going to do from there part on. Now सवाल ये होता है कि आपको कैसे पता चले किस रास्ते पे. Knowledge is power. आपको जितनी नॉलेज होगी उतना आसान होता रहेगा. ठीक है, तो आज आपको कुछ नॉलेज मिलेगी, उसकी बेस पे आप मजीद बढ़ाएंगे, उसकी में तो मजीद, और आपके पास दरवाजे खुलते रहेंगे. अगर आप सिर्फ बैठे रहे और ये इंतजार कर दे कि कोई मुझे कहेगा कि यहाँ अप्लाई करो और मैं अप्लाई करूंगा मिल जाएगा, you will always be a dependent person. You will always be that person who asks for the fish every single day. Okay, learn how to fish, not ask for fish. तो मछली हर रोज ना मांगे, उनसे सीखें कि टेक्निक्स क्या है, मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूं. करंटली मैं मेम्फिस में हूं, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन देना होता है. वेयर यू कम फ्रॉम, दिस इज द एथिक्स. बाय द वे, जब आप प्रेजेंटेशन देखें तो ये भी सीखें कि प्रेजेंटेशन देने का स्टाइल क्या होता है. ये भी एक एजुकेशन है, ये भी स्किल होती है जो आपको डेवलप करनी होती है. So this is a campus. This whole is a campus. It's a bridge between the two states. रिवर के ऊपर है, and then pyramid एहराम मिस्र की तरह लग रहा है. मेम्फिस जो था ये दारुल खिलाफा था फिरौन के ज़माने में इजिप्ट का. So it was the capital of Egypt at the time of Pharaoh, and of course pyramid is related with Egypt. So Memphis, since it was the capital, so they built this pyramid, and of course it's a big store there. But this is how it all started. Anyway, so this is my story. I finished my undergrad in 2002 from Sarsa University in Karachi in biomedical engineering, and then I chose it. I literally chose biomedical engineering. I was the second batch in the whole Pakistan and that university because that was the only university offering back then. Now there are probably 15-20 different universities who offer biomedical engineering. मैं MS के लिए आया था 2002 में, और फिर मैंने of course I continued PhD. Finished in 2008. मेरी पहली पोस्ट डॉक जो थी वो हार्वर्ड स्कूल में थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थी. उनका मेडिकल स्कूल के जो हॉस्पिटल है एफिलिएटेड, मैं उसके स्ट्रोक डिपार्टमेंट में था. एंड देन सेकंड मेरा पोस्ट डॉक जो था वो मैंने जानबूझ के बात, पोस्ट डॉक इज अ ट्रेनिंग आफ्टर PhD, एंड आई डिड टू डिफरेंट टू डाइवर्सिफाई माई स्किल्स. यू सी माई पॉइंट. आप, और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. देखिए, ये चीज एकदम नहीं आती, आपने प्रॉपरली प्लानिंग करनी है. तो प्लानिंग कब होती है? जब आप सोचते हैं, और आप सोचते कभी, जब आप नॉलेज एक्वायर करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या हो रहा है, आप कहाँ पर हैं, आपको क्या चाहिए, आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, ये सब चीजें होनी चाहिए. एंड दीज सेमिनार्स, ये सेमिनार हो गए, इस तरह के और होंगे, सब में जाए, सुने. बहुत दफा ऐसा होगा, बल्कि हमेशा ऐसा होगा कि आपको चीजें रिपीट मिलेंगी. तो जब रिपीट हो रही तो आपको ये पता चलता है कि हाँ, फलाना टीचर ने, फलाना स्पीकर ने कहा था, इसने भी ये बोला, इसका मतलब है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. और कहीं आप नई चीजें सीखेंगे, वो चाहे एक लाइन ही क्यों ना हो, एक नया जुमला ही क्यों ना हो, बट यू ऑलवेज लर्न, एंड दैट इज द नॉलेज. एंड knowledge is power. I'm going to keep repeating this one sentence again and again. Okay, so currently of course I work as a scientist, and I built my career from 2002 till 2013. So it took me almost 11 years before I am who I am. और ये कब था? ये मास्टर्स की बात है, इससे पहले अंडरग्रेड. सो अगर आप पूरी स्टोरी देखें तो इट्स ऑलमोस्ट 16 years before you become something who you want to become. और मैं इसको वो भी कर दूंगा, प्रूव भी करूंगा, based on our religion, our beliefs, and also scientific. Alright, so this is what I do. The images are not good, radiologist is not happy, and they want to see these beautiful images. फिर of course ये तो मैंने एक दिन के काम नहीं है. It's of course it's something that you learn and you try and you build. फिर टाइमिंग का होता है कि अगर किसी की आप इमेजिंग कर रहे हो स्पाइन की, वो 5 मिनट लें, और of course 5 मिनट एक पिक्चर लेने में, किस तरह आप 6-8 पिक्चर लेते हैं तो वो 1 घंटा MRI मशीन में उस छोटे से टनल के अंदर लेटे में हो, versus you use techniques to bring it down and the image quality is comparable. So this is again, these are the daily things that I do or improve or bring new technology, bring new technologies, like I said, so to improve. So this is all vessels, arteries, and then these are the veins, shoulder hai, and then you can see this is tumor, by the way. So you learn how to do these techniques, and then you master it working with technologies. क्योंकि जब आप build करते हैं, खैर मैंने build नहीं किया था, I just implemented it.
बट इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी जरूरी है कि आपके पास टेक्निक्स हो, टेक्नोलॉजी हो एंड नो हाउ हो, ठीक है। मुझे नहीं मालूम आप लोग सबका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन जब आप सॉरी केमिस्ट्री के हैं आप, तो सबका मुझे नहीं मालूम कि सबका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं, और अंडरग्रेड में ये मेरा भी वो था, इतनी सारी मैथ पढ़ ली, इतनी सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, कहाँ काम आएगी, कब यूज करेंगे, और एक डायलेमा होता था। अंडरग्रेड डिग्रीज आर नॉट डिजाइन टू मेक यू साइंटिस्ट। आप साइंटिस्ट नहीं बन जाते अंडरग्रेड डिग्री के बाद, बैचलर्स के बाद। तो आराम से बिल्कुल ठंडे दिमाग के साथ ये सोचें आप कितनी अच्छे अंदाज से कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अब मुझे ये यूज होते हैं जब कोई रिसर्चर आता है और वो बताना शुरू कर देता है, यूज फोरियर ट्रांसफॉर्म, this is, let's say, J coupling, this is chemical shift. Now chemical shift, you need to know the chemistry, ठीक है। For J coupling you need to know the chemistry, but if you go deeper in it and then you try to do the mathematical modeling, you should know mathematics, ठीक है। Then you know physics for understanding the MRI. So MRI is all about physics, nothing but physics, ठीक है। And then you realize, yes, you had all those knowledge from undergrad, from your college degree. Even आपके इंटरमीडिएट में भी आपको सिखाया जाता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ठीक है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने वहां क्लियर नहीं किए, बाद में प्रॉब्लम आती है ना। अब तो यूट्यूब है, मैं भी यही करता हूँ, यूट्यूब पे जाके कोई भी अगर मुझे मेरा अंडरग्रेड बायोमेडिकल में, सो आई हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, मैथ एंड द बायोलॉजिकल द केमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, बट कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आते, यू गो यू यूट्यूब इट एंड देन यू लर्न। लेकिन आपकी अगर बेसिक आपको याद हो तो इट गेट्स वेरी इजी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो डोंट गेट बॉदर्ड कि आप इतना कुछ सीख रहे हैं अंडरग्रेड में, उसका फायदा क्या होगा, ठीक है। It will happen maybe 15 years from now, 10 years from now, but you will realize it will come. टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो वही रहेंगे, ठीक है। So keep that in mind. All right, I'm also a safety officer, so that means MRI is a big magnet. इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 60,000 गुना ज्यादा है जो हमारी दुनिया की मैग्नेटिक फील्ड है। और again, if you are from chemistry, you have learned spectroscopy or spin. I don't know how much you go deeper, but this is the whole concept, that MRI is basically, we do spectroscopy using MRI, and one of the thing, of course, this is my part, is making sure that everything is safe. The line when we don't do animal scanning, I just said like king of jungle is being scanned and is also a safety issue, right? This is not a human being, this is just a dummy. But if somebody gets stuck, it's a catastrophe. It's a very dangerous thing that could happen to someone. Anyway, and ये चीज देखिए, मैं pictures जब it could be a show off that, oh, I do all these things. Yes, it is a show off. I am showing off to show you that you're a human being. Make sure you have some kind of extracurricular activities और शौक और आपकी hobbies, ठीक है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप कहीं अप्लाई करेंगे, आप कहीं पर भी एडमिशन के लिए करेंगे, दे वांट टू नो आपकी और क्या एक्टिविटीज हैं। इससे पता क्या चलता है, नंबर वन, आप अपना टाइम बहुत अच्छी अंदाज से यूटिलाइज करते हैं कि आप पढ़ भी रहे हैं, आपकी फैमिली भी है, आपकी जॉब भी है, और आपने शौक भी पूरे कर रहे हैं, ठीक है। सो यू आर अ गुड टाइम मैनेजर विदाउट इवन सेइंग इट। सेकंड, उनको ये पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर। Are you indoor or outdoor? Are you physically active or you're mentally active? All these things comes from these, things. So you don't say, oh, मैं बहुत अच्छा, ये कर लेता हूँ. No, you show them, and this is how you show them. ठीक है. Second, of course, now you would say this is in America that you have all these opportunities. Definitely yes, but in Pakistan, if you see, you will definitely find all these different adventures if you want to do it. Now, अगर आपने नहीं करना, जरूरी नहीं कि आप इसलिए करेंगे मैं कर रहा हूँ. You do it because you have the personality to do it. आप स्विमिंग करें, आप बाइकिंग करें, आप वैसे ही हाइकिंग करें, you're going on expedition, whatever you want to do, make sure you have some kind of शौक, आपके शौक होने चाहिए और जिसको आप अफोर्ड कर सकें और आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक हो। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, ठीक है। आपको ब्रेक चाहिए होता है, आपको ये सब चीजें चाहिए होती हैं ताकि आप यू कीप योर माइंड सेन। ओके, एनफ अबाउट मी, नाउ लेट्स गो टू योर्स फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, और लुबनान ने भी इस तरह से शुरू किया था, एंड दिस इज ऑल आई कैन टेल यू, इफ यू नो योर सेल्फ, जितनी चीजें मैंने आपको दिखाई आप भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन your field of interest, not of course the one I do it. And how do you do it? ठीक है, if you figure out आपकी strengths क्या हैं, ठीक है, और आपकी shortcomings क्या है जिसको आपने improve करना है। कोई शख्स भी परफेक्ट नहीं होता, आपने डेवलप करनी होती हैं चीजें।
लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि जिस फील्ड में आप जाएं या जिस एरिया में आप जाएं आप उसमें अच्छे हों, ठीक है ना। आपकी जैसे आपकी डिग्री केमिस्ट्री में आप इवेंचुअली आपको ऐसा लगता है जॉब करने के बाद या दूसरे तीसरे सेमेस्टर या फाइनल सेमेस्टर या कोई एक एक्सपीरियंस आता है जिंदगी में जो आप एक्सपीरियंस करते हैं कि यू आर अ गुड मैनेजर, ठीक है, यू आर नॉट अ गुड केमिस्ट, believe me, you can change your field and become a manager. आप फिर कोई डिपार्टमेंट मैनेज करें, in terms of you're based on your skills. आप किसी कंपनी में जाते हैं, वहां पर किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं जो आपकी टेक्निकल बैकग्राउंड को भी अप्रिशिएट करे और and it's in the same area and you become a manager within your realm, ठीक है। बात ये होती है कि आप स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे उसके लिए। पहली बात होगी आप अपने आप को जाने। अगर आपको ऑलरेडी पता है who you are, what do you want and what your capabilities are, what your skills are, then you will build more skills, ठीक है, and then you will become who you want to become. अगर नहीं मालूम, this is the time, find yourself, who you are, ठीक है। और इसका मतलब ये कि पर्सनली प्रोफेशनली आपकी जो लिमिटेशन है उसको भी देखें और बेस्ट ऑफ ऑल व्हाट इंट्रिग्स यू। आपको गूस बम्प क्या चीज देती है, जब आप सोचे तो आपके एकदम कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दैट इज द थिंग यू वांट टू डू, ठीक है। एंड दिस इज नॉट इजी, एक दिन में नहीं आएगा, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं आएगा, इसमें साल भी लग सकता है। आप अपने कॉन्फिडेंट से पूछें, अपने स्टूडेंट, अपने टीचर से पूछें, अपने जो आपके इंचार्ज जो आपको अच्छी तरह जानते हैं। एंड द बेस्ट ऑफ ऑल योर मॉम, आपकी फैमिली पूछ सकती है, अपनी अम्मी से पूछें, शी विल गिव यू अ लॉट ऑफ stuff about you and then you build. Now she may not give you technical detail but she'll give you, तुम ये काम में अच्छे हो, इसमें नहीं हो, या मैं ये काम तुम्हें नहीं देती कि तुम नहीं कर सकते। That means you don't have those skills and that's how you develop. Now you will translate that into your professional career, लेकिन कहीं से आपने स्टार्ट करना है। That's one. Now मसला सबसे बड़ा क्या आता है when you think about career, that इतने करियर होते हैं कि आप ये पता नहीं चलता कि which one you should choose। फिर आपका सोशल प्रेशर बहुत होता है कि फुप्पा के बेटे ने कर लिया ये, मामा के बेटे ने वो कर लिया, चाचा के बेटे ने ये कर लिया, या खाला की बेटी ने ये कर लिया, और अब अम्मी कह रही है तुमने कुछ नहीं किया। ये सब चीजें होंगी एंड दिस इज पार्ट ऑफ द कल्चर। यहाँ पर भी होता है अपने एक स्टाइल में। पीयर प्रेशर में कहना चाह रहा हूँ, पीयर प्रेशर बहुत होता है, ठीक है, कि आप चूज क्या करें, ठीक है। नाउ यस, इवेंचुअली देखिए आप तालीम हासिल करते हैं नॉलेज के लिए, क्या आप सब चीज़ों को समझ सकें, लेकिन इवेंचुअली अपने बिल्स भी देने हैं, आपने रेंट भी देना है, घर का खर्चा भी उठाना है, चीज़ों का भी उठाना है। तो यस, इट विल कम इवेंचुअली टू समथिंग वेयर यू कैन अर्न मनी। अगर आप ऐसा कोई फील्ड चेंज का इंतखाब करते हैं, चूज करते हैं, जिसमें आप अपने दिलो दिमाग लड़ा कर और इन्वॉल्व करके पढ़ेंगे, पैसा खुद ब खुद आएगा। इस बात पे मत जाइएगा कि पूरी दुनिया वो कर रही है, मैं ये क्यों करूं, ठीक है। What I'm trying to say, don't follow the herd. Like पूरी कम्युनिटी कर रही है, आप भी करें, ये ना करें। I work with the MBBS जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अमेरिका आते हैं रेजिडेंसी करने के लिए, PhD करने के लिए, उनमें बहुत से ऐसे होते हैं कि दे डॉक्टर्स। जब आप उनसे पूछते हैं क्यों पढ़ा था, कहते हैं GPA परसेंटेज अच्छी आ गई थी, एडमिशन मिल गया and I came, ठीक है। That's a problem. I'll be very honest to you. आप सिर्फ इसलिए पढ़ें, ठीक है, कि आपने इंजीनियरिंग इसलिए पढ़ेंगे, आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। और मेरे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या था कि मेरे वाले साहब ने, तो 10 साल पहले जब मैं शायद 6-8 साल का था, और डॉक्टर बनोगे इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर इंजीनियर, तो ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। What I'm trying to say is the pressure from the family, surrounding, peer pressure, आपका जो सोसाइटी का होता है, ये सब आएगा, ठीक है। इसलिए आपको अपने बारे में समझना बहुत जरूरी होगा। आपको खुद पता होना कि आप किस चीज के काबिल हैं, आप वही करेंगे, ठीक है। आप अगर मैथ में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और फिजिक्स में अच्छे हैं, STEM is your area, it could be, लेकिन आपको मालूम है this is not my area, I am not into it, of course then you have to think otherwise. But ये प्रॉब्लम सबके साथ रहता है, या अमेरिका में भी रहता है, and the answer is not easy कि आप कहाँ जाएं। फिर सबसे बड़ी बात कि इसमें हमेशा एक बात याद रखिएगा, इट्स अ साइकिल। ऐसा कभी नहीं होता आप एक चीज करेंगे और आपने मास्टर कर लिया, यू मूव ऑन। नो, यू कीप कमिंग बैक टू बैक। एंड द रीजन आप इसलिए आते हैं कि आपने समझना होता है कि एक चीज आपने पढ़ी समझी, उसके बाद दोबारा आपको आना पड़ता है पहले स्टेज पे कि आपकी व्हाट इज योर लिमिटेशन,
आपने उसको कैसे ओवरकम करना है, एंड देन इट गोज बैक. सो ये चीज चलती रहेगी. यू हैव टू कीप दोज इन माइंड. इट विल नॉट बी जस्ट वन टाइम, इट विल कॉन्स्टेंटली इवॉल्व. ठीक है, एक चीज करेंगे, लर्न करेंगे, मास्टर करेंगे, दोबारा आएगा. तो दिस थिंग विल गो ऑन एंड डू नॉट गेट बॉदर्ड विद इट. मैं अभी भी सीख रहा होता हूँ, ठीक है, एंड इट विल गो फॉर एवर. We always be a student. It comes from professional experiences, of course, personal experiences, and everything. अच्छा, now career planning में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिससे मैंने आपको ग्राफ शुरू में दिखाया ना, सॉरी पिक्चर, कि what is the best decision in your career. देखें, it is almost impossible to make or give you a good answer just in one sentence. ऐसा कभी नहीं हो कि आप एक डिसीजन लेंगे and that would be the best decision. आप you will make a bad decisions, number one. You will of course experiment. अब आपको कुछ नहीं मालूम होता, लेकिन जो चीज आप हमेशा जहन में रखेंगे ना, that will make you eventually make a good decision, and that is what do you like to do. देखिए, आपको क्या अच्छा लगता है कुछ भी करने में, नंबर वन. सेकेंड, आपको सेटिस्फाई क्या करता है, एंड द थर्ड, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो मैं आपको इसकी मिसाल दूं. आप अगर ऐसे आपके जहन में ये होता है ना कि यू वांट टू जस्ट वर्क फ्रॉम 9 to 5, आप सुबह से शाम तक काम करें, आपको महीने की तनख्वाह मिल जाए. That is one kind of course, person that would like to have a life. Number one. Second, कुछ ऐसे होंगे जो चाहेंगे नहीं. So, for instance, I'll give you my example. I do mentorship. ठीक है? I don't get paid for it. मैं पैसे चार्ज नहीं करता. But this thing keeps me motivated. And 9 to मैं भी जॉब पर हूँ and I'm doing it. And of course, this will add on my time today कि मैं आज देर तक मुझे रुकना पड़ेगा. ठीक है? ये सब चीजें आती हैं कि आप जब कोई भी करियर आप बिल्ड करेंगे ना, उस करियर में आप याद रखिएगा कि सैक्रिफाइस होंगी. ठीक है, लेकिन दिस इज समथिंग, इफ इट इंट्रीग्स यू विल डू इट. आपको अगर मजा आता है, सेटिस्फाई करता है, नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स नहीं होगा. दूसरा ये भी ध्यान में रखें कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपने जॉब नहीं करनी है, नॉट अ 9 to 5 वर्कर, यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, आपने अकॉर्डिंगली वही वो एक स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी जो वहां पर आपको लेके जाए. ठीक है, आपने इंजीनियरिंग पढ़ ली, लेट्स से आप रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, तो डेफिनेटली यू विल गेट सम टेक्निक, सम स्किल्स इन दैट एरिया, नंबर वन. ठीक है, देन यू विल ट्राई टू गेट सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग वेयर यू कैन बिकम एंटरप्रेन्योर, एंड उसके लिए अपने एक्सपीरियंसेस लेने. इसमें पीएचडी की जरूरत नहीं होगी. Does it make sense to you? On the other hand, you want to become a teacher, a professor, and of course PhD is your destination. So understand what is your career path, accordingly to plan it. Okay, not everybody has to get the scholarship, not everybody has to go for higher education. That is something I'm trying to make sense out of this. Okay, अपने आप को जानना, of course, अपने strengths को जानना, आपके skills जो आपने हैं आपके पास और जो आपने एक्वायर करनी होंगी. एंड हमेशा याद रखिएगा, योर कैरेक्टर, योर वैल्यूज एंड योर पर्सनालिटी मेक्स अ बिग डिफरेंस. ठीक है, इंटरव्यूज के अंदर वो आपसे कभी ये नहीं पूछेंगे, कहीं कहीं वो आपसे पूछ लेते हैं थोड़ा टेक्निकल इंटरव्यू, पर इंटरव्यू का जो ओवरऑल पर्पज होता है वो ये होता है कि दे वांट टू नो योर वैल्यूज. आप कौन है, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी क्या, आपका कैरेक्टर क्या. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल बी वर्किंग विद देम एवरी डे 8 to 10 hours. So they need to know about you, and you have to make sure that comes in your work ethics. ठीक है, हमेशा एक बात देखिएगा, मैंने आपसे कितनी बार कहा, knowledge is power, and knowledge will only come if you explore opportunities and you try to gather as much information as possible. ठीक है, and in the end take action. ठीक है, now सवाल आता है कि ये सब चीजें आएंगी कहाँ से. मैंने आपसे कहा ना कि when you know knowledge and all that, आप डिग्री जो आप कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, आप कोर्सेज पढ़ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आपने ऑफ कोर्स अच्छे ग्रेड लेने हैं तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है. बट ये याद रखिएगा कि इट इज नॉट जस्ट द नॉलेज दैट यू आर स्टडीइंग वुड जस्ट हेल्प यू जस्ट बिकॉज यू गॉट अ गुड ग्रेड. द आंसर इज नो. रीड, अपनी फील्ड के बारे में पढ़ें,
दूसरी फील्ड्स के बारे में पढ़ें। मैं कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, इज ऑफ कोर्स ऑल रिलेटेड विद एमआरआई। वहाँ के एडिटर इन चीफ है, एंड ही इज अ फेमस साइंटिस्ट। वो उसका जो स्टूडेंट था, जब उसको पीएचडी ट्रेनिंग करा रहा था, तो उसने कहा था कि देखो, दो चीज उसने बोली थी। नंबर वन, उसने कहा था कि जो चीज मैंने की है ना, मैं जो रिसर्च मैंने की और मैं नई टेक्निक्स लाया हूँ, या मैं नया रिसर्च मैंने डिस्कवर किए, डेवलप किए, या मैं उसको प्रोड्यूस किया, मैंने नहीं किया। मैंने क्या किया, किसी का रिसर्च ली, किसी और की रिसर्च ली, किसी और की रिसर्च ली, सोचा उसके बारे में एक होता है ना, आप वो करते हैं, ये इंटीग्रेट करते हैं। आपकी केमिस्ट्री में देख लें, लोगों को नोबेल प्राइज मिलते हैं, लोग नई डिस्कवरीज करते हैं। वो डिस्कवरीज कहाँ से आती हैं? वो उनकी अपनी नहीं होती कि उन्होंने जीरो से शुरू किया। नो, वो किसी और का काम लेते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, एंड देन दे विल अर्न नोबेल प्राइज। ठीक है, व्हाट दिस साइंटिस्ट वर सेइंग दैट आई डिड नॉट डू एनीथिंग। मैंने किसी और का किया, उसके अंदर नई चीज लेके आया हूँ, और फिर इसको मैंने डिस्कवरी की है। मीनिंग आई वॉज डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, मीनिंग आई वॉज डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल नॉलेज। आपको दूसरों की रीडिंग, दूसरों से सीखना होगा। ठीक है, तो रीडिंग, ये आप जो भी सुन रहे हैं, ये भी इज पार्ट ऑफ इट। ठीक है, दैट्स वन। सेकेंड चीज उसने ये कही थी, उस साइंटिस्ट ने अपने पीएचडी स्टूडेंट को, कि हमेशा याद रखना कि हफ्ते में एक दफा जरूर अपनी फील्ड से के अलावा किसी और चीज को पढ़ना। सूरत से आप केमिस्ट्री में, आप कोशिश करें कुछ ना कुछ आप फिजिक्स और मैथ से भी पढ़ना। समझने की जरूरत नहीं कि आप पूरा अजबर कर लें और उसको उसकी थ्योरम्स पढ़े, नहीं। कोई चीज जो आपकी फील्ड से रिलेटेड ना हो, ताकि आपको पता तो चले बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, बाकी दुनिया से भी अपने आप को फेमिलियराइज रखें। ठीक है, वो कैसे होगा? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से भी होगा, कि आप दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होंगे, सेमिनार्स वगैरह में आप ट्रैवल करेंगे, आप लेक्चर सुनेंगे, मुख्तलिफ वॉलंटियर वर्क करेंगे किसी और डिपार्टमेंट के साथ। पेड वर्क हो, नॉन पेड वर्क, डजंट मैटर। आप किसी भी किस्म के ऑनलाइन कोर्सेज ले लेने का, आजकल इतने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं कि आपको ये बहाना चलेगा ही नहीं कि अच्छा मुझे तो मैथ इसलिए नहीं आती कि मैंने पढ़ी नहीं। ऑनलाइन जाए, आपको लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये मैथ का जो प्रॉब्लम है, ये किस तरह से आपको केमिस्ट्री में या फिजिक्स में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ जब स्ट्रक्चर बनाते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, वो स्ट्रक्चर भी फिजिकल, देयर इज अ फील्ड कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ से आई है? दिस इज द ओवरलैप ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इसी में पॉइंट, अपनी फील्ड से बाहर निकलें, पढ़ें। जितना नॉलेज आपको आएगी, आपको आसान होता रहेगा। आगे है क्या, दुनिया कहाँ जा रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन माइंड। नाउ जो चीज आपने, बाय द वे, आप देखेंगे, मैं कोशिश ये करूँ कि आपको मैं टेक्निकल और आपको मैं पर्सनल, दोनों चीजों को मैं कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक स्किल तो ये हो गई जो नॉलेज हो गई। सेकंड, अपनी स्किल्स, और स्किल्स देखिए दोनों है, और पर्सनल भी है, प्रोफेशनल भी है। प्रोफेशनल तो वो है कि आपको मशीन चलानी आती है, लेट्स से केमिस्ट्री के अंदर आप कोई मुख्तलिफ टेक्निक सीखते हैं, और वो टेक्निक आपको मास्टर करना जरूरी होगा। कि अगर मैं आपसे आज को ये कहूँ कि अच्छा आपने लेट्स से PCR, आई डोंट नो इफ यू गाइस डू और नॉट, और या लेट्स से आप कोई मुख्तलिफ केमिकल्स को मिक्स करके कुछ, लेट्स से यू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। If I ask you to come and do it in my lab, so I can take you as a research assistant, how good you are at it right now? एक तो करना होता है, दूसरा उसको समझना होता है। These are the technical skills. But guess what? उससे ज्यादा important जो चीज आपको जहन में रखनी है, वही और पर्सनल स्किल्स। अगर टेक्निकली आप बहुत साउंड हो, आपकी 4 GPA, आपने बहुत अच्छी रिसर्च की हो, लेकिन आप उसको अच्छे अंदाज में प्रेजेंट नहीं कर सके ना, दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, दुनिया आपकी चीजों को कम समझेगी जब आप उनको एक्सप्लेन करना आपको आएगा, आप उनको समझा सकेंगे कि दिस इज व्हाट आई डिड, दिस इज व्हाट इट मींस। उसके लिए बहुत सी चीजें जरूरी हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ डू यू कम्युनिकेट, हाउ डू यू अप्रोच पीपल, ऑडियंस। देखिए अभी अगर मैं होता फिजिकली और 40-50 बच्चे बैठे होते, हाउ डू आई कीप देम एंगेज्ड? ठीक है, हाउ डू आई कीप देम एंटरटेन्ड? हाउ डू आई मेक श्योर कि उनको बोरियत नहीं हो रही है, वो समझ रहे हो। और आपने ये सब सीखना पड़ता है। जैसे आपने देखा ना कि लोग जमाइयाँ लेना शुरू कर दें और आप दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू चेंज योर व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग और टीचिंग देम। ठीक है, ये सब चीजें स्किल्स हैं। इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल्स, आप दूसरे लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, टीम वर्क कैसा करते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आप खुद काम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्रिटिकल थिंकिंग कम्स फ्रॉम वेयर? फ्रॉम रीडिंग। देखिए अगर आपने साइंटिस्ट बनना है ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा,
आइडियाज आते हैं जब आप रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग कब आती है? जब आपको समझ में आ रहा हो कि हो क्या रहा है। जब आपको ये नहीं पता हो रहा कि हो क्या रहा है, यू विल नेवर बी अ क्रिटिकल थिंकर इन दैट एरिया। ऑफ कोर्स बाकी चीजों में कर सकते हैं। मिसाल को मैं आपको दूं, पाकिस्तान में क्रिकेट सब खेल देखते हैं। अगर अभी आप किसी को बोलें कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने जो टूर वो किया कैंसिल, आप किसी भी क्रिकेट दीवाने से पूछें, पूरा क्रिटिकल थिंकिंग के साथ आपको जवाब देगा, ये हुआ है ये। दैट इज व्हाट यू आर इन्वॉल्व, यू हैव द नॉलेज। सेम थिंग हियर, इफ यू हैव द नॉलेज एंड द बेसिक नो हाउ, यू विल डू अ क्रिटिकल थिंकिंग। नहीं होगा तो आप आए बाएं शाएं कर रहे होंगे। ठीक है, रिसर्च स्किल्स अगर आप सीख सकें बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर ना हो तो ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन दैट यू विल लर्न। ठीक है, एंड देन मेक श्योर आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है ना, आप कुछ भी कोई भी काम कर रहे हो, आपको आपका टीचर अंडरग्रेड में सिखा रहा हो कि ये इक्विपमेंट ऐसे यूज किया जाता है, लर्न इट। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, it's not a joke. All right. I will quickly go on some of these things. Of course, इस मैंने कहा ना कि टॉप, अगर मैं सिर्फ ये टॉपिक लूँ ना कि आपने जॉब कैसे लेनी है, ये भी एक टॉपिक है 1 घंटे का। लेकिन आपने चीज़ों पे क्या फोकस करना है। इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस थिंग। एनी फ्रीलांस वर्क, नेटवर्किंग, आप लोगों को फील्ड में जानते हो, स्टे कनेक्टेड। आपके कोई कॉन्टेक्ट्स हो, कीप गेटिंग अपडेटेड फ्रॉम देम। आपका सीवी और कवर लेटर बहुत अच्छा होना चाहिए। एनी वॉलंटियर वर्क पार्ट टाइम भी बहुत आपको हेल्प करेगा। दिस आर द टिप्स, कीप इन माइंड। एनी ऑफ दीज इज इंपॉर्टेंट। आप सब कर सके अच्छी बात है, एक भी कर सके बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको क्विकली बताना चाहूंगा, डू एंड डोंट्स। स्टे प्रोएक्टिव, इट्स अ डू थिंग। ऑलवेज आप हमेशा एक्टिव रहें। डायनेमिक का मतलब है आप हर जगह पे हाथ पैर मारेंगे। अभी जिस उम्र में आप हैं, डोंट लिमिट योरसेल्फ। हर अपॉर्चुनिटी अवेल करने की कोशिश करें, चाहे वो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो ना हो, यू विल लर्न। ठीक है, अपने फैमिली फ्रेंड से हमेशा मशवरा किया करें जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, ऑफ कोर्स। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज से बहुत फायदा लें, फ्री हैं, ऑन टॉप ऑफ द टॉप टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब डोंट्स की बारी आ गई। डोंट्स टू बहुत ज्यादा टाइम इस पे ना गुजारें कि इन्फॉर्मेशन इज फॉर्मेशन आप ले रहे हैं। वो जो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं मालूम है या नहीं है, हमारे जमाने में होता था बस नोट्स ले लो, नोट्स का फोटो कॉपी करा लो, किसी का नोट ले लो, इसके नोट्स ले लो। टू मच इन्फॉर्मेशन ले लिया, बहुत ज्यादा चीजें नोट्स ले लिया, पढ़ा कभी नहीं। दैट्स अ वेस्ट। ठीक है, अच्छा, एंड देन ऑफ कोर्स आपने टाइम लगा रहे हैं आप हर चीज एक्वायर करने में, लेकिन डिसीजन आपने कोई नहीं लिया। स्टे अवे फ्रॉम इट। ठीक है, एंड देन प्लानिंग बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक लुबना स्टार्टेड, यू हैव टू डू द डेवलपमेंट प्लानिंग। आप नहीं करेंगे, यू विल बी स्टक इन दैट वन स्पॉट। And then these are, of course, I will just leave it some of these things there. Just want you to understand कि अब आप सिस्टमेटिक से करेंगे, आप उसको किस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, I will just leave it there when you have, so you guys can see this in the recorded video, but contemplate, think मैंने क्यों लिखा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसके बाद बेस्ड ऑन द टाइम अवेलेबल मैं भी कुछ क्वेश्चन ले लूंगा, and then we'll go to the higher education if we have time. If not, we can do another seminar, because मुझे ज्यादा अच्छा ये लगता है कि आप मुझसे सवालात पूछें और मैं आपके जवाब आप क्लियर करूं, रादर देन मैं लेक्चर पे आपको नोट्स चीजें देता रहूं। दैट्स टू मच। मैंने एक चीज आपको शुरू में बताई थी कि यू हैव टू, आप हमेशा सीखते रहते हैं और आपने एक प्लानिंग करनी होती है और आपने एक डिसीजन लेने होते हैं, और देयर इज अ स्टेज फॉर इट। जॉब पर, सो दिस इज जॉब परफॉर्मेंस, देयर इज नो जॉब बेसिकली इन द स्टार्ट। ओके, क्योंकि आप स्कूल में होते हैं, स्कूल से फिर आपका ट्रांजिशन होता है लेट्स से हायर एजुकेशन के लिए, या आप जॉब लेने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड। लेट्स से आपने 20 के अराउंड आपने जॉब शुरू की है, आपने अंडरग्रेड नहीं किया, आपने कोई डिप्लोमा किया, एंड यू स्टार्टेड वर्किंग, राइट? सो समवेयर अराउंड हियर इट स्टार्ट्स, एंड यू विल सी परफॉर्मेंस बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। क्यों? क्योंकि आप अभी सीख रहे होते हैं, यू आर टू यंग। ठीक है, it is all about from school to going getting a job. So 20-25, by the way, ये बिल्कुल एग्जैक्ट विंडो नहीं है, आप इस पे आप मत समझिए जहां मैंने लाइन लगा दी, ये भी मैंने डाउनलोड किया था कि तो वहीं पर एग्जैक्टली है। नो, इट इज जस्ट लाइक दैट एरिया अराउंड 25-22 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो आप देखिए ये एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं अपने आप की, कि आप जॉब से यूनिवर्सिटी पढ़ के निकल रहे हैं और आप आगे जा रहे हैं। तो इंजीनियर, डॉक्टर्स, हर एक का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। Getting the first job, ठीक है, and then it's all about maturity and experience.
इट हैज नथिंग टू डू विद योर एजुकेशन। जितनी नॉलेज आपने पढ़ी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, बट यहाँ क्या आपको काम आएगा? नॉलेज। कौन सी नॉलेज? प्रोफेशनल भी और पर्सनल भी। लोगों से डील करना, रिमेंबर मैंने आपसे कहा था कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, अपना खुद करना, ये सब चीजें यहाँ पर आएंगी, ठीक है। एंड फिर आपकी ग्रोथ शुरू होती है। देखें ये ग्रोथ क्या है, टेक्निकल भी है, प्रोफेशनल भी है, पर्सनल भी है, सब है, ठीक है। एंड देन ये मिड करियर है जहाँ पर आप डिसीजन लेते हैं कि आपने जॉब चेंज करनी है, एंड देन परफॉर्मेंस ऊपर जाना, स्ट्रेट लेना, डाउन जाना, ये सब का क्या होते हैं आपके डिसीजन नंबर 1। और आप किस फील्ड में हैं, क्या वो फील्ड आपके लिए थी या नहीं थी, तो ये डिसीजन यहाँ पर करने से अच्छा क्या है यहाँ करें, इससे पहले करें, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स देन आप लेट करियर में आते हैं तो चीजें फिर और नीचे जाना शुरू हो जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू बेसिकली परफॉर्म एंड हाउ मच यू लाइक। नाउ इसको मैं अब कंपेयर करूंगा, जो ज़ाहिर ये मैंने खुद भी ये रिसर्च की भी है एंड एस्टेब्लिश रिसर्च है। तो ये 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60, 80 तक ये एज रेंज है। और ये ब्रेन वॉल्यूम, आपके दिमाग का जो वॉल्यूम है, टिश्यू, ठीक है। ये तकरीबन 140 से 150 लोग हैं आई थिंक, और इन सबको मैंने खुद MRI किया था, उनके ब्रेन MRI, इन सब की डेटा एनालिसिस मैंने खुद की है। ये मैंने की थी 2010 और 13 के दरमियान, 2-3 साल के अंदर। और ये ऑफ कोर्स इससे पहले ही मैं मूव आउट हो गया था, तो मेरे पेपर कभी पब्लिश नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखें, आप 20 साल के, आपका 30 साल तक आपकी हल्का सा ये जो वो है आपका टिश्यू, ये ब्रेन टिश्यू ऊपर जा रहा है। ये ग्राफ इतना अच्छा दिखा नहीं रहा, बट इट शोज व्हाट, आपकी ग्रोथ हो रही है। टिल व्हेन? टिल 40, ठीक है। 40 के बाद आप क्या है, आप मेंटेन एंड देन इट गोज डाउन। नाउ दिस इज द स्टेज where till that point you are learning, you are developing, ठीक है। And again, this is a data that I processed each and every one of them. Earlier career, early age, mid career, mid age, and then of course late. अब आपको मैं और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। आप अगर आप यहाँ देखें, this is the point where you are shooting, going up, of course going down be, and you know it could go anywhere, but 40 and 40, this show exactly the top of your career. अभी अगर आप 22-23 साल के हैं, या 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, आपके पास आराम से 15-20 साल हैं जिसमें आप अपने आप को डेवलप करेंगे एंड यू विल बी समवेयर। तो मैंने 2 चीजें बताई, जो जर्नल ग्राफ है, फिर डेटा दिखाया जो ब्रेन का टिश्यू है, जो कि शो कर रहा है, मीन इट्स अ रियल थिंग, इट्स नॉट अ जोक, एंड आई शोड यू अर्लियर। मेरी पहली स्लाइड ब्रेन इमेज के बारे में थी। अब आपको तीसरी चीज बताता हूँ, तो ऑब्जर्वेशन, ऑफ कोर्स क्लियर डेटा, एंड थर्ड नवर रिलीजन। अगर आप देखें, ये अल्लाह ताला की सुन्नत रही है कि हर प्रॉफिट को, किसी भी पैगंबर को जो प्रॉफिस दी गई है ना, उनको जो पैगाम दिया गया, यू आर द प्रॉफिट, गो एंड डू द जॉब, spread the religion that I am commanding you, सब around 40। मूसा अलैहि सलाम, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी और प्रॉफिट को उठा के देखें, about that age, as much as we know about the history and everything. Now Isa alayhi salam, it's a completely different, of course, he was a miracle, he started from his cradle, but if you see even religiously, what is the creator Allah doing? He is training his prophets from the early age till the age of 40 or around 40, not exactly 40, you see my point, okay? And then they were commanded, go do your job. So this is the prime of your life. Now it is not exactly 40, it means somewhere around about 35, it could be 30 for some people. So from 30 to between 40, that's where you strive a lot. And then for the next 15-20 years, you do the job because you are trained for it. So आपकी ट्रेनिंग 22 साल में खत्म नहीं होती, आपकी ट्रेनिंग, आपकी ग्रोथ 35-40 साल तक जाती है। सो डोंट गेट annoyed by कि आप कुछ नहीं कर सके, बाकियों ने कर लिया, नहीं, आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। आई एम इन अर्ली 40s, दिस इज द प्राइम ऑफ माई करियर, आई कैन फील इट, आई कैन सी इट, कि मेरी ग्रोथ, मेरा एक्सपीरियंस, हर चीज ऐसी जगह पर है जहां से आई कैन मेक गुड डिसीजन एंड आई कैन हैव गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। So don't get bothered. Now with that, just quickly one thing that I would like to show, and then I will take some questions. Okay, this is of course a very old, quote that I did, but read what it says. Few students are able to articulate what they can gain from their experience in higher education. It means what? बहुत कम student ऐसे हैं जो जो चीजें एक्सपीरियंस उनको हायर एजुकेशन में वो सीखते हैं ना, उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें।
इसका मतलब क्या हुआ? हवाई फायर, तीर चला रहे हैं हवा में, अंधेरे में, कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, सो विद दैट आई विल स्टॉप हियर बिफोर आई कंटिन्यू फर्दर बेस्ड ऑन आपके क्वेश्चन. सो अभी तक अगर किसी का सवाल है, please ask. You can unmute yourself. You can ask question. If not, you can text. You can write in the chat box. I can read it from there. If अगर कुछ भी नहीं है तो फिर then I will continue. अगर time allow करे तो. Okay, so there's a question from Hafsa Noor, and she's asking that being in my third semester of chemistry, what should be our focus now? Good question. It's very early for you, so it's a good thing that you are proactive. In your at this stage, जब आप third semester है, it's a second year और आपके 2-2.5 साल आपके पास और हैं, you should focus the first thing on your grades. In early age, early career, your first focus will be your grade, meaning अच्छा पढ़ें, अच्छी skills acquire करें, जो knowledge है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा focus करें, and make sure you read not just the books. Online courses से भी आप बहुत बोलें, let's say आपको कोई concept आपके टीचर ने आज पढ़ाया, ठीक है, हर टीचर एक बात हमेशा याद रखिएगा. मैं आपको अभी बात कर रहा हूँ ना, आप में से लग से 50 लोग यहाँ बैठे हों, तो 50 में शायद 25 को बाद मेरी बात समझ में आए, बाकी 25 को ना आए. It's normal because I cannot cater everything according to everybody needs. तो वो 25% मुझसे नहीं सीख पाएंगे. हो सकता है वो किसी और मेंटर, किसी और टीचर की बात को समझ पाए और बात वो वही कह रहा होगा या कह रही होगी जो मैं कह रहा हूँ. बट दिस इज अ स्टाइल. सो लेट्स से यू स्टडीइंग इन योर थर्ड सेमेस्टर और कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आए क्लास में. Make sure you study them off camp, later on. Library जाएं, online पढ़ें, कोई YouTube video watch कर लें उस topic पे ऊपर. But make sure this is your focus because you want to get the best knowledge at this time. That would be number one. And then, if you have time, read about the new discoveries areas in your field. ठीक है, और वो आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, पेपर्स ना पढ़ें, रिसर्च पेपर्स, जस्ट आर्टिकल्स जो जर्नल वो देते हैं. एंड ये इस बात को सर्च करें कि व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड सी व्हाट इंट्रिग्स यू. दैट वुड बी द बेस्ट एडवाइस एट थर्ड सेमेस्टर आई कैन गिव यू. ठीक है. All right. Any other question? Any courses you can recommend for our improver? So courses in terms of again, so which kind of courses? So Hafsa asking any courses you can recommend for our improvement overall. So depend कि किस किस्म के courses. Let's say अगर आप अपने areas के बारे में पूछना चाह रही हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि अपने जो courses आप आजकल पढ़ रही हैं ना third semester में, try to get same courses online. ठीक है, that teaches you the same relevant topics that you are studying right now and improve it. उसको मजीद अच्छी तरह से समझ सकें. अक्सर क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट को आप 10 डिफरेंट अंदाज में पढ़ा सकते हैं या समझा सकते हैं. अगर आपका टीचर एक अंदाज में से पढ़ा रहा है, आप किसी और का पढ़ें, एक और अंदाज में सीखें, फिर किसी और का देखें थर्ड, तो आपको हर दफा नई नई चीजें मुझे अक्सर ये होता है, मैं यूट्यूब वीडियो वॉच कर रहा होता हूँ, किसी भी बेसिक मैंने उस दिन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे मैं आजकल बहुत ज्यादा काम मेरा हो रहा है, तो I'm not very strong in spectroscopy. तो मैं पढ़ रहा था, मैंने I was watching a YouTube video and everybody 2-3 different lectures and everybody gives you a different perspective and it is just amazing that some of these are literally bachelor students who recorded these videos or and still a PhD student, not undergrad, sorry, the PhD students, and they give you a very basic information. Some of them are top MIT or Harvard professors, free videos online. So that would be my suggestion, that make sure that you study the same courses online which are free. YouTube पे अगर आप सर्च करें, अक्सर YouTube पे बहुत अच्छे lectures आ जाते हैं. मैं अक्सर YouTube पे, मैं पहली चीज YouTube पे सर्च करता हूँ, and there is one concept which is very relevant to I think is a basic science, either physical chemistry or chemistry, and that professor is from Harvard and she made a 6-minute video or 10-minute. Believe me, to understand that 6-minute video, I watched other videos and it took me 2 days, but I understood the whole concept and I know everything now. So this is what you do. You basically learn from these recorded lectures, from different resources, your concept which you are studying right now. Don't spend any time anywhere else, okay? अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है. अस्सलाम वालेकुम सर, एनी क्वेश्चन. ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को फिगर आउट करें कि हम एक्चुअल में क्या है. हिज फील्ड के स्किल में हम खुद, ठीक है,
या सो जो सवाल एक है कि जरूरी है कि ऑफ कोर्स हम लोग अपने अपने स्किल्स या जो पर्सनालिटीज को डेवलप करें, लेकिन ये कैसे मालूम करें कि हु वी आर, ठीक है? सो दैट्स इट इज द क्वेश्चन दैट आई इट्स बीन आस्क्ड ऑन द चैट। सी, आप एक दिन में कभी भी नहीं मालूम कर सकते हु यू आर। यानी देखें, ये लेक्चर जो आप अभी सुन रहे हैं ना, या वेबिनार, ऐसा नहीं होगा आज आप शाम को सुन रहे, कल सुबह उठेंगे और आपकी सारी लाइफ जो बदल चुकी होगी और आपने अयाज साहब ने तो कमाल कर दिया और हर चीज ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर हुआ तो प्रॉब्लम है। ये आप अभी से शुरू करेंगे, ये जस्ट एक चिंगारी है जो मैं लगा स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि आप अपने इन चीजों के बारे में अभी से सोचना शुरू कर दें, ठीक है? इट विल टेक यू टाइम, ठीक है? नंबर वन। सेकेंड, इट विल नॉट जस्ट हैपन just by yourself. You have to ask your mentor. Let's say आपका कोई टीचर जैसे आपकी बहुत अच्छी बनती है, they understand you, talk to them, ask them, कि मैंने वेबिनार आप में थी, आप भी थी, मैं भी था, या आप थे, मैं भी था, मुझे ये चीज समझ में आई है, I wanna further improve myself. What should I do? And it will start from there. Now in the nutshell मैं आपको बताता हूँ शुरू कैसे होगा। नंबर वन, एक तो आप ये देखें कि आप हर इंसान को पता होता है कि who they are, they just don't know it. आप, और ये चीजें कहीं ना कहीं आपने अपने आपको करनी पड़ती है। आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, टू बी ऑनेस्ट। मेरा टाइटल है एमआर क्लिनिकल एमआरआई फिजिस्ट। मैं फिजिस्ट नहीं हूँ, मेरी ट्रेनिंग एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर है, फिजिस्ट नहीं है, पर आई अंडरस्टैंड फिजिक्स। जिसने एमआरआई मशीन बनाई थी, कॉन्सेप्ट लेके आया था, दे वर फिजिस्ट, हार्डकोर फिजिस्ट, ठीक है? और वो मैं नहीं। क्वांटम फिजिक्स आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई डोंट नो द क्वांटम फिजिक्स। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? सो how do I know कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, ठीक है? You have to investigate and invest some time, ठीक है? और the best thing is see what, जो चीजें आपको ना अपनी लाइफ में देखें, कौन से ऐसे काम जो आपके घर वाले देते हैं और आपको मालूम है आप ही को देते हैं, किसी और को नहीं देते। आपका टीचर आपको अक्सर चीजें देता है एंड वो आपको उसके अंदर शाबाश देता है और कहीं पर आपके क्रिटिक करता है। इस तरह से आप सीखते हैं स्लोली। यू ऑब्जर्व, ठीक है? And once the observation comes, then it would be easy for you to really make a plan of work. So first अपने आप को find करें, that is very important, ठीक है? अच्छा, I want to get, okay, so there's a Bushra Yunus, she's asking, I want to get fully funded scholarship for my master's in chemistry, but now I'm going to be enrolled in 7th semester. I don't want to get gap in studies, so at this stage what should be my focus? The easy answer is start reading about different programs. Don't restrict yourself to one country. पूरी दुनिया के so अगर कोई ये चाहते हैं कि they want to continue, start reading about different programs in your field of interest. जैसे केमिस्ट्री में अगर आप आगे पढ़ना चाह रही हैं, start reading about it, ठीक है? हर प्रोग्राम के बारे में पढ़ें, उनकी कोर्स वर्क, उनका रिसर्च वर्क, उनकी जो डिफरेंट लैब्स होती हैं उस डिपार्टमेंट में, उनके बारे में, ठीक है? एंड देन learn how you will basically explore that area in different universities. So let's say university physical chemistry में करा रही है, एक कर रही है space chemistry में, right? Like I don't forgot the name, what exactly it's called. एक होती है marine chemistry है. I mean you learn about all these things and see उनका focus क्या है, उनके courses क्या है, उनका जो स्टूडेंट वो ट्रेन कर रहे हैं उसमें वो टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी वो क्या पढ़ा रहे हैं। इसमें आपको हफ्ते और इसमें आपको महीनों लग जाएंगे, एक महीना भी नहीं, महीनों, कि आपको दुनिया की यूनिवर्सिटीज को सर्च करेंगी, फिर ये देखें वो किस किस्म की रिसर्च कर रहे हैं, उनकी जो लैब्स हैं, ठीक है? तो जब आप ये सब पढ़ लेंगे ना, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगेन आई सेड इट, नॉलेज इज पावर। द मोर नॉलेज यू हैव, द इजियर इट गेट्स। फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा आपने नंबर 1 मास्टर्स करना है तो करना भी किसमें। भी आपके पास मुश्किल से 4-5 ही एरियाज होंगे जिसपे आप यू आर एक्सपोज टू इट। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सी चीजें मास्टर्स होंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े। ये जरूरी है कि फर्स्ट इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर मास्टर्स, मेक श्योर यू नो ऑल द डिफरेंट एरियाज बिफोर यू मेक योर डिसीजन। ना उसका फायदा क्या होता है, जब आप SOP लिखेंगी ना तो उसको आपको पता होगा आपने लिखना क्या है, ठीक है? जब आपने इतनी सारी फील्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, जब आपने एक ही फील्ड यार पढ़ा तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। मीनिंग different masters or higher specialized areas in the chemistry, जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे ना पूरी दुनिया में, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आएगी। It helps you to choose the field and then write a good strong SOP and make a good
application overall. Now the question comes in, okay, what is a strong application? The strong application means first of all you know what you're doing और अपने skills जो आपकी हैं आपको कैसे इसको connect करती हैं, and then it will make it easy. All right, next question is Kuzmari is asking, after bachelor what is the most important thing? Career building, okay, most thing career building or MS or MPhil देखें. So करियर के लिए आप ये देखें कि आपने आगे करना क्या है उसमें. अगर आप आगे लेट्स से पढ़ाना चाहती हैं, ऑन अ यूनिवर्सिटी लेवल, ऑफ कोर्स देन इट विल बी मास्टर्स एंड पीएचडी. अगर आप समझती हैं कि नहीं आपने पढ़ाना नहीं है, आप इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं, देन अकॉर्डिंगली आप ये देखेंगी कि करंटली विद इन पाकिस्तान जो इंडस्ट्रीज हैं, किस किस्म की इंडस्ट्रीज हैं और उनकी ऑफ कोर्स खपत, और वो आपको कैसे पता चलेगा? आप कनेक्शन से ही मालूम करती हैं. लिंक्डइन में जॉब्स पढ़ा करें. जब आप किसी भी जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना, उसमें खुद लिखा होगा we want person who can do this आपको खुद पता चल जाएगा कि अच्छा they want graduates जिनकी ये skills हों. और फिर आपको ये पता चलेगा कि आपने 100 जॉब पढ़ी और 100 में से 80 के पास मोस्ट वाली स्किल्स हैं. तो that is your area where you would like to build your expertise. तो फिर आप जो भी मास्टर्स करें आप उस एरिया में करें. अगर आपने अच्छी जॉब लेनी हो, लग से आप कहती हैं नहीं, आपको मालूम है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ केमिस्ट्री आपको बहुत इंट्रीग करता है, बहुत ज्यादा आपको एक्साइट करता है, फिर रिगार्डलेस ऑफ जॉब गेट दैट डिग्री. क्योंकि जब आप बहुत अच्छे अंदाज से दिल और दिमाग लड़ा के पढ़ेंगे ना, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, आप खुद ब खुद दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं. Alright. B.Ed is necessary for teaching after BS chemistry from University of Education. We are studying courses of education also. What is the benefit of studying these courses? So देखें B.Ed again एक बात याद रखिएगा कि आप अगर पढ़ा नहीं भी, let's say मैं टीचिंग नहीं करता, मैं कभी टीए नहीं रहा, अपने पीएचडी में मैं कभी टीए नहीं रहा. अब मैं क्या कर रहा हूँ? सारा वही काम जो टीचर करते हैं, लेक्चर्स देना, ठीक है, पढ़ाना, सिखाना, ठीक है. सो इट इज गुड टू नो हाउ टू टीच एंड गिव प्रेजेंटेशन इन द बेसिक ऑफ डिलीवरिंग अ लेक्चर. सो अगर बीएड में आपको वो सिखाते हैं और अंडर ग्रेड के प्रोग्राम में सिखा रहे हैं, लर्न इट. बिकॉज कहीं ना कहीं जिंदगी में आपने काम करना होगा. इवन अगर आप किसी कंपनी में भी चले गए ना, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, इवेंचुअली यू विल बी गिविंग लेक्चर्स. Maybe I'm just giving you advice. So having extra चीजें is not a bad idea. So if they're teaching you, teach it, learn it. ठीक है. So if they're teaching you B.Ed, I would say it's a good thing that they're giving you an extra course or skills. Okay. Sir, okay. So Iram Anwar पूछ रही है. Okay. Sir, how I can search a platform for a job if I've done an online free course, like if I've done creating writing from just skill platform, so how can I search platform for searching job online? Okay. ठीक है. अगर आप पाकिस्तान में पूछें तो मैं आपको बड़े ऑनेस्ट से बोलूं, मैं पाकिस्तान से कोई 20 साल से बाहर हूं, तो मुझे लोकल नहीं मालूम जॉब्स का. लेकिन जो मैं आपको बेस्ट वो दे सकता हूं वो ये होगा कि ऑफ कोर्स अखबारों में भी आती है, लेकिन लिंक्डइन जो कि प्रोफेशनल सोशल स्किल है, जैसा कि फेसबुक है ऑफ कोर्स गप्पे लड़ाने के लिए और कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट लगाने के लिए और दूसरों को तंग करने के लिए. लिंक्डइन, LINKEDIN, लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसपे आप कनेक्ट कर सकती हैं सारी इंडस्ट्रीज हैं उनको, लोगों को, और फिर उनकी वो लोग अपडेट्स देते रहते हैं. जैसे हमारा हॉस्पिटल है कैंसर का, तो हमारे उनके जो लिंक्डइन वो है प्रोफाइल, उस पर जो भी जॉब वो पोस्ट करते हैं, it is open to all. So that would be the best thing I can give you, that LinkedIn would be the best. And also the Friends Connection organization की जो वेबसाइट हो, इस पर भी चेक कर सकते हैं. ऑनलाइन देखें, लोकल कोई ना कोई ऐसे वो होंगी मुख्तलिफ वेबसाइट जिस पर आप जा सकती हैं, लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम होता है. द बेस्ट आई कैन टेल यू वुड बी सोशल मीडिया, दैट इज लिंक्डइन. ठीक है. अच्छा, सर which extracurricular activity should you suggest for a girl because most of the girls didn't get permission to go out? Yes. So देखिए, आपने अपने सोशल नॉर्म के अंदर ही रहना पड़ता है. मैं पाकिस्तान में रहा हूँ अब अपने शुरू के 22 साल मैंने वहीं गुजारे, 22 या 22.5. वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है उस जमाने में, और भी उस वक्त इंटरनेट नहीं था, तो हम लोग गलियों में गुजारते थे वक्त. हर वो काम किया है जो कोई भी नॉर्मल बच्चा बाहर गलियों में करेगा. ठीक है. सो बहुत सी चीजें हमें वो नहीं थी जो आप लोगों को ज़ाहिर सी बात है मुयस्सर है. नंबर 1, तो ये चीजें जहन में रखिएगा कि आपको अगर कोई चीज मुयस्सर नहीं है, ठीक है, फाइंड ऑल्टरनेटिव्स.
सो अगर आप ये कहते हैं कि भाई घर में मतलब बाहर जाने का नहीं, और यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू गो आउट, ठीक है, universities, campuses are, of course, some of them are very good. I mean, at least I am impressed with most of the campuses जो कि अब बन रहे हैं या जो गवर्नमेंट के अंडर है. मैं इवन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर भी गया था, मैं इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद गया हूँ, मैं पंजाब पीयू गया हूँ, मैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में. अभी मैं पाकिस्तान में था कुछ 2 महीने पहले ना. आई गिव लेक्चर. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड गया. मेरा ताल्लुक स्वात से ओरिजिनली, सो फैमिली मेरी कराची में. आई गो टू स्वात, आई गिव लेक्चर. यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड, इट वाज अ ह्यूज कैंपस. इतना बड़ा था कि वो मुझे गाड़ी में कहते कि हम आपको टूर देंगे. इवेंचुअली मैं नहीं किया, बट इट वाज ब्यूटीफुल. सो यू कैन ऑलवेज फाइंड स्टफ ऑन कैंपस. टेबल टेनिस, बैडमिंटन, सॉकर, वॉलीबॉल, एंड डेफिनेटली लड़कियों के लिए भी उसमें चीज़ होंगी. जिम वगैरह का उनके पास होती हैं चीज़ें, ठीक है. दैट इज़ वन. मैं आपको बताऊं कि मैंने शायद उसमें नहीं लगाया अपने उसमें, लेकिन मैं जो हूँ ना, आई एम अ वेरी बिग ऑन स्किल्स. और मैं आपको एक बात बताऊँ यार, इट्स माय पर्सनल थिंग बट आई कैन शेयर विद यू. मैं अपने बच्चों को बहुत ऑनेस्टली से बोलता हूँ कि मुझे तुम्हारे ग्रेड्स के ऊपर बिल्कुल भी फिक्र नहीं है. आपकी ग्रेड अच्छा है बुरा है सबके साथ होता है. एक कोर्स आपको अच्छा पसंद है, नहीं है, लेकिन आई टीच देम स्किल्स. और उस स्किल्स में पता है क्या है? गार्डनिंग, फिटनेस. मैं उनको वो भी सिखाता हूँ. बॉय स्काउट में तो उनको मैं ये तक सिखाता हूँ कि वो मुख्तलिफ उसके लिए आप टाई या नॉट या गिटान कैसे लगाते हैं. मैंने गार्डनिंग में ये नहीं करता कि मैं पौधा ला के लगाऊं. नो, आई स्टार्ट फ्रॉम बीज, यानी बीज ला के बोता हूँ. एंड आई कैन टेल यू इट इज अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, बट आई डू इट. और आपको आता भी है. फल, सब्जियां, टमाटर, सब चीज़ें आती हैं. मेरे पास वो भी है, वाटरमेलन का भी है मेरे पास, और चीज़ें भी हैं. आई डू दैट, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज अ स्किल. It is a skill because you have to treat your plants like your child, like your kid. ठीक है, that is also a skill. So अगर आप मुझसे पूछेंगे ना घर में क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ. अगर आप फिटनेस करना चाहें, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, जिम जाना इज नॉट द थिंग एनी मोर. आप घर में आप यूट्यूब वीडियोस वॉच करें एंड यू विल फाइंड सो मेनी डिफरेंट एक्सरसाइजेज. 5-10 मिनट, दैट्स इट. आप रोज वो करें, दैट विल गिव यू फिटनेस, दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ एंड ऑल दैट. आप घर में अगर आपके छोटी जगह आप गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं. मैंने यूनिवर्सिटी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि आप वहां से वो कर सकते हैं, ठीक है. आप छत पे खेल सकते हैं. आई मीन, प्लीज फाइंड समथिंग दैट इज ऑफ योर इंटरेस्ट. ट्राई थिंग्स. मैं जो हूँ, मैंने हर स्पोर्ट्स ट्राई किया हुआ है, और उसके बाद बहुत से ऐसे मैंने एक बार खेला, कभी नहीं खेला, बिकॉज इट वॉज नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट. सो यू हैव टू फाइंड दीज थिंग्स. एंड ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स इज वन थिंग, अदर स्किल्स आर डिफरेंट. मैंने कहा कि गार्डनिंग एक स्किल है. गार्डनिंग ये नहीं होता कि आप बस लाए, डाला, पानी डाला. नो, ऐसा नहीं होता. आपने कितना पानी डालना है, किस पौधे को कितना डालना है, वो कब बीज लगाना है, कब जो है वो मौसम में कौन सा पौधा खराब हो सकता है, उसको कीड़ा किसको लगता है, किसको नहीं लगता है. अब इट्स अ स्किल, एंड ट्रस्ट मी, इतना मजेदार चीज है ये. इफ यू एवर स्टार्टेड, यू विल एंजॉय इट. आई स्टार्टेड वेरी लेट, मे बी 4-5 साल पहले, बट आई हैव लर्नड अ लॉट. और इस तरह की और भी स्किल्स हो सकती हैं. कैन थिंक ऑफ सो मेनी. हैंडीक्राफ्ट हो गया. अक्सर लोग जो है ना आजकल देखें, आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं. पीपल टेक रिसाइकलिंग, यानी आप कोई भी चीज लें और घर पे कोई भी यूज करने वाली चीज बना सकते हैं. वो प्लास्टिक हो, वो गत्ता हो, वो ये सब चीजें आप कर सकते हैं. तो देखिए, आप मुझसे ये चीजें पूछिए, मैं बोलूंगा इफ यू थिंक अबाउट इट एंड एक्सप्लोर, यू विल फाइंड सो मेनी. आपको प्रॉब्लम पता है क्या होगा? चूज करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा चूज करूं, कौन सा ना करूं. तो टेक इट इजी, स्टार्ट स्लो, and then build upon that. And always ask friends, family, जिनके साथ आप कनेक्शन है कि what can I do, what would I like to do. ठीक है. Okay, let's see what else. Okay, so Hafsa Noor, she's asking, how can we get a high paid job with a chemistry as a major except for teaching? Okay, so देखिए, ये सवाल जो मैंने आपको एक जवाब दिया था ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको जॉब इस बात पे नहीं मिलती कि आपकी डिग्री क्या है. आपको जॉब इस बात पे मिलती है आपके पास स्किल्स क्या है. ठीक है. आई हैव स्टूडेंट्स. मेरे एक स्टूडेंट ने एक बार मुझसे पूछा कि आई लिटरली मेंटर फ्रॉम अंडरग्रेड टिल पीएचडी. मास्टर्स हो गया, पीएचडी हो गया, पोस्ट डॉक हो गया. एंड वन डे द स्टूडेंट आस्क्ड मी, अब क्या करूं. तो मैंने क्या जवाब दिया? सिर पीटो, अपना सर दीवार से मारो. अगर पोस्ट डॉक के बाद भी मुझे डिसीजन करना पड़े, मुझे आपकी हेल्प करनी पड़े, सब प्रॉब्लम. ठीक है. दैट मीन्स व्हाट? आपने सोच समझ के नहीं पढ़ा, बस आप पढ़ते गए, डिग्रियां पे डिग्रियां. एक और चीज मैं आपको बोलूँ, ये बहुत अच्छा सवाल हफ्सा ने पूछा कि यस, लड़कियों के लिए क्या होता है.
And unfortunately, sorry for all the females, participant, and even the teacher and the person who invited me for this talk. But देखिए, mostly teacher जो हायर एजुकेशन में आते हैं वो क्या होता है, वो कहते हैं अंडर ग्रेड डिग्री के बाद जॉब नहीं मिली, मास्टर्स कर लिया, मास्टर के बाद नहीं मिली, एमफिल कर लिया, एमफिल के बाद नहीं मिली, पीएचडी कर लिया, पीएचडी के बाद क्या मिला, जॉब मिल गई, अब मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, ठीक है. एंड अंडरस्टैंड दैट इज अ प्रॉब्लम because you just studied for a job. What are you really a teacher? I'm not a good teacher. If I ever have to teach MRI physics or physics math, I would do a bad job. But I'm a good mentor because this is what I like to do. ठीक है, मेरा कोई PhD student नहीं है personally, और मैं कर भी नहीं सकता because you have to spend a lot of time with them. I rather spend with through my mentorship to produce as many PhDs as possible. ठीक है, so understand. What is needed for you for job comes from when you learn about the jobs. ठीक है, आप ये देखें कि जब जॉब वो आती है ना पोस्टिंग, उसमें लिखा होता है आपको ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये चीज आनी चाहिए. This is how you build your profile. तो कोर्सेज तो आप पढ़ रही हैं, उसके कोर्सेज भी पढ़ें, कॉन्सेप्ट भी पढ़ें, और स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा. अच्छा, आपकी जीपीए अच्छी आनी चाहिए, द आंसर इज यस. आप ये मत सोचिएगा जीपीए ना आए. मैंने जब कहा, मैंने अपने बच्चों को कहा, मीनिंग आपको एक कोर्स नहीं हो रहा और जीपीए नहीं आ रही, डोंट वरी अबाउट द जीपीए, कॉन्सेप्ट पे क्लियर वो करें. क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जब आपसे बात करेंगे, दे वुड लाइक टू नो. कहेंगे इंटरव्यू में ये नहीं पूछेंगे कि मुझे बताओ स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या या फलाना का. नो, दे विल आस्क क्वेश्चन टू सी आप क्या करना चाहती हैं अपनी जिंदगी में आगे, या आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में आगे, और वो आप किस पे बेस करेगा, आपने पढ़ा क्या है, किया क्या है, आता क्या है, और आगे करना क्या चाहते हैं. तो जब आप ये सब चीजें बताते हैं, फिर बोल देंगे ये जॉब उसके लिए जरूरी है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ. फिर आप ये बता सकते हैं कि ये मेरा स्टार्ट है, इवेंचुअली आई एम गोना गो एंड स्टडी. व्हाट वुड यू स्टडी, उसे सवाल पूछेंगे, आप बोलेंगे कुछ भी मिल जाए, तो ये तो जवाब नहीं होगा ना. तो जवाब आपका होना चाहिए ये मैं करना चाहती हूँ, ये मेरी स्किल्स हैं, और अगर स्किल्स नहीं है तो मैं स्किल्स कैसे डेवलप करूंगी या करूंगा. यहाँ पर लूंगा एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का, प्रोफेशनल, एंड देन आई विल गो बैक एंड स्टडी दैट. दिस इज व्हाट इज द बेस्ट आंसर, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग दैट यू कैन गिव देम. इंटरव्यू में वो आपको ये चीजें देखते हैं, हाउ गुड ऑफ अ ट्रेनर और प्रोग्रामर और अ प्लानर यू आर. ओके, सो अच्छी जॉब लेने के लिए जरूरी क्या है, नंबर 1 स्किल्स डेवलप करेंगे, ठीक है. और स्किल्स के लिए जरूरी है कि आप पढ़ें जो अभी जॉब्स पोस्ट हो रही हैं कि वो किस किस स्किल्स मांग रहे हैं. एंड द थर्ड थिंग इज, हमेशा याद रखिएगा, पहली जॉब आपकी जो वो आइडियल जॉब नहीं होती ना, वो आपकी लास्ट जॉब होती है. पहली जॉब में आपको बहुत रिगड़ा देंगे, आपको तंग करेंगे. तंग से मुराद कि आप फ्रेश होते हैं ना, तो बहुत सी चीजें आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, आपको नहीं आएगा, तो यू विल लर्न. You will be a child for them. You just started the job, and it will give you the basic platform where you will launch from. ठीक है, and then you will start developing there. एक बात हमेशा याद रखिएगा, पहली जॉब में अगर आपको वो ये भी कहते हैं ना कि तुम्हारा काम है कि तुम्हारे एक्सेल शीट में डेटा डालो, डू इट. पता है क्यों? They are testing you कि what kind of person you are. कि आप चाहते हैं कि बस आए और साहब जी की तरह डेढ़ के चाय आए, पानी आए, और आप बस क्लिक करते रहे और ऑर्डर देते. नो, you don't want to show them, you want to show them, no, I'm here to learn. अगर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप देर तक रुकें, मीटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, स्टे देयर. वो आपको अब्यूज ना करें, मीनिंग हर वक्त आपको काम देते रहे, वो भी ठीक नहीं है, वो भी गलत है. लेकिन यू शुड try to learn every single thing that you can learn from that thing within the first 6-8 months. ठीक है, अंडरस्टैंड. पहली जॉब के अंदर वो आपको डेफिनेटली आपको प्रोबेशन में क्यों रखते हैं, they want to know who you are before they start teaching you. देखें, मैं भी ये करता हूँ. मेरे पास बहुत दफा ऐसा आता है कि नीदरलैंड से, हॉलैंड से, जर्मनी से स्टूडेंट आते हैं. ऑफ कोर्स वो इंटर्नशिप पे आते हैं वहीं की गवर्नमेंट से. वो अगर 6 महीने के लिए आता है या आती है, मैं पहले महीना चेक करता हूँ कि इज इट वर्थ स्पेंडिंग दैट मच टाइम ऑन दिस स्टूडेंट. पता है क्यों? क्योंकि सर अक्सर क्या होते हैं, वे आते हैं, उनको कोई शौक नहीं होता पढ़ने का, बस उनको मिल गया, वो आ गए. अब अगर मैं अपना टाइम उन पर इतना लगाऊं कि इवेंचुअली वो मुझे फायदा ही ना दे, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, दिस इज हाउ इट वर्क्स. If I'm spending 6 months to train you, I better get something out of it. तो अगर आप कोई नया जॉब वाला हायर कर रहा है, they need to know you are capable of learning, and you are worthy of teaching or training, and yes, you will pay back. वरना भाई मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है, मैं क्यों करूंगा. तो मैं अगर मेंटरशिप कर रहा हूँ,
ठीक है, मुझे रोजाना सक्सेस स्टोरीज मिलती रहती हैं। सक्सेस स्टोरीज क्या होता है? ईमेल आती है, सर आपसे 4 महीने 8 महीने 4 साल पहले मैंने आपसे मेंटरशिप ली थी, नाउ आई एम डूइंग दिस, इट मेक्स मी फील हैप्पी। जब ये देखता हूँ मैं कहता हूँ यस, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई गेट। द सेम थिंग दे वांट टू गेट प्रोडक्ट फ्रॉम यू, सो बेटर बी अ टीम प्लेयर। इसलिए मैंने आपसे कहा था प्रोफेशनल के अलावा पर्सनल स्किल बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी ओपन टू डू एनीथिंग। देखिए मैंने भी ये सब काम किए हैं कि आपसे क्लर्क क्लर्क वाला जो काम आपसे मुझसे करवाया गया मैंने किया है। मैं पीएचडी था, मैंने एक हार्वर्ड में पोस्ट डॉक की, मैं एक और लैब में गया था पोस्ट डॉक। जो शख्स था वो टीचर, वो सिर्फ असिस्टेंट था, रिसर्च असिस्टेंट, उसका जॉब था मुझे असिस्ट करे। वो मुझे बॉस करने लगा, मैंने ठीक है क्योंकि उसको आता ज्यादा था। आई लर्न फ्रॉम हिम फ्रॉम 6 months टू ट्रेन माई सेल्फ, नथिंग रॉन्ग विद इट। एंड लिटरली मैं पोचे की तरह साफ कर रहा था टेबल, ठीक है, और आई वाज 34 year old, have a PhD, have a postdoc from Harvard, have my own grant, और मैं सारे इक्विपमेंट साफ करता था, सब करता था। दिस इज हाउ यू लर्न। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। सो टू गिव यू अ वेरी क्लियर आंसर, learn about the detail of the jobs जो भी आ रही हैं, and try to develop skills if possible. ठीक है, all right. Next question is, so what are the skills or ways we have to know to give good or perfect interview? Oh, okay, so इंटरव्यू पे मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाया, मेरा एक टेक्स्ट है, मेरे पास टाइम नहीं, वरना मैं यूट्यूब वीडियो बना दूं कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। इंटरव्यू देना एक स्किल है। इस पे again, you know, I can, if it's really important, you guys can directly contact me and I can give you all the, मैं मॉक इंटरव्यू भी करता हूँ by the way स्टूडेंट्स के साथ। मेरे पास अभी 4-5 लोगों की रिक्वेस्ट है कि उनको मुझे मॉक इंटरव्यू करवाना है। तो देखिए इंटरव्यू के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि आप ना फेक मत कीजिएगा। मतलब फेक का मतलब ये मत कीजिएगा कि आप ऐसा उनको शो कर रहे हैं कि आप हैं नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप इफ यू आर अ पर्सन हु, उसकी देखिए आपके जो आपने पहना हुआ है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, उससे पता चलना चाहिए हु यू आर। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट अक्सर मुझे कहते हैं, जैसे कुछ उड़ती लड़कियां वो इंटरव्यू देती हैं फ्रांस में, जर्मनी में, कहती हैं वहां पे आजकल बहुत रिजेक्ट कर देते हैं, मैं सर ढांपती हूँ, मैं सर ना ढांपूं। नो, यू मस्ट डू द स्कार्फ, शो देम दिस इज हु यू आर, डोंट फेक इट, because this is your personality, this is your identity. Do not compromise your identity for any interview. This is who you are, this is what you feel comfortable, and you should be proud of your identity. Do not fake it. That would be the first thing I can tell you. Second, आप जो आपका इंटरव्यू करेगा उसके बारे में पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो हु विल इंटरव्यू यू एंड रीड अबाउट देम। आजकल तो ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनकी लिंक्डइन के ऊपर जाके पढ़ सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे डू, व्हाट काइंड ऑफ कमेंट्स पीपल हैव सेड अबाउट देम। उनको जो वो मिलता है ना, जो लोग वो करते हैं, ये रेफरेंस और वो करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनके बारे में वो पढ़ें। नंबर 2, थर्ड, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, वो मांग क्या रहे हैं, कंपनी के बारे में पढ़ें, कंपनी करती क्या है, ठीक है, जॉब टाइटल क्या है, बी देयर अहेड ऑफ टाइम। ठीक है, ये तो हो गया जो जाने से पहले। इंटरव्यू के दौरान लेट देम स्पीक, डू नॉट इंटरप्ट। ठीक है, गिव देम फुल एक्सपोजर, यानी आप बैठे ना तो यू मरियल नहीं बैठा, चेस्ट यानी आपका अपराइट, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, यू मीन यू बिजनेस। व्हेन यू टॉक टू समवन, फेस द होल बॉडी, ये नहीं कि सर ना घुमाए, पूरी बॉडी घुमा के बात करें। यूज योर जेस्चर, ठीक है, एंड जब आपकी ना बॉडी से पता चलना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज से, कि यू मीन बिजनेस। आप यहाँ पर ना बस ट्राई मारने नहीं आए, यू आर देयर, यू मीन बिजनेस, यू मीन यू आर अ सीरियस कंटेंडर। ये आपका वो जाना चाहिए मैसेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड रीड अबाउट योर सीवी, जो आपने सीवी में लिखा है सब पढ़ के जाएंगे। आपसे सीवी से सवाल कर लिया, आपको नहीं आएंगे, आपकी सीवी आपको ही नहीं आ रहा, तो आपको पता होना चाहिए। फिर ऑफ कोर्स में और डिटेल आ जाती है कि आप सबको कोई सवाल करें, आपको नहीं आता तो ये नहीं बोले नहीं आता, आप ये बोल सकते हैं कि काफी अर्सा हो गया पढ़े हुए, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल में दिस इज द बेस्ट आंसर, लाइक पॉलिटिकल आंसर्स देना, एंड इट गेट्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लेकिन these are the basic that I can give you right now. All right. Okay. Is it good to try more than one thing, or is it
a waste of time, and one should focus on one thing. Hold on just a minute. Sorry for that. Is it good to try more than one thing, or is it just waste of time? So let me answer this question. At this age, I would say you should try more than one thing. If you do not know कि आपको क्या चाहिए या क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, so you can try more than one. Not a problem at all. This time you can experiment and you can try different things. No problem at all. फिर आपका second सवाल है, and one should focus only on one thing in life, which is productive. So देखिए, what is productive? If you enjoy it, if you like it, this is productive. यानी आप you make changes, you're making progress and you're staying dynamic. ठीक है? Then yes, keep doing it. अगर आपको ये होता है ना कि देखिए मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे एक चीज मैं बहुत ट्राई की नहीं हुआ and then I completely left it. या मैंने स्पोर्ट्स खेला, I didn't like it, मुझे वो वही नहीं लगा, I left it. या मैंने जॉब के अंदर एक काम होता है कि मुझे दिया गया, मुझसे नहीं हो रहा था, I did not like it. I really started looking for different ventures. So yes, this is something that you can always change. Basically, change your focus, change your of style of approaching stuff. So ये चीजें आती रहेंगी. देखिए ये part of learning है. Problem ये है ना कि इस हमेशा की बात है कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये one solution doesn't fit all. मेरी जो नेक्स्ट सोल्यूशन आपको दूंगा ना वो सबके लिए काम नहीं करेगा. जर्नली जो चीजें मैं आपको बता रही जर्नलाइज्ड हैं, उसमें फिर स्पेसिफिक आ जाता है. तो ये आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है. कुछ लोग होते हैं कॉन्फिडेंट, वो बोलते बहुत नहीं है. ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है. एंड आई कैन टेल यू अ लॉट ऑफ फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस, जो मैं लोगों को जानता हूँ, मेरा खुद भी किया है, कि यू हैव टू बी इंटरेक्टिव, यू हैव टू बी ह्यूमन. हमेशा एक बात याद रखिएगा, कोई भी आपको जॉब पे लेगा ना, they want to know your personality, because you will be working with people and they want to know आपकी people skills क्या हैं. ये बहुत important है. अगर नहीं है तो develop it. ठीक है. अगर if you are again for instance एक सवाल पूछा गया था कि मैं किस किस्म की hobbies करूं. If you are a shy person and you think कि आपको ज्यादा मजा आता है कि you be on your own, so this you will have a different hobbies versus I do outdoor, but I do those hobbies which are single. like मैं लोगों पे डिपेंड होना नहीं चाहता, तो मैं हर वो स्पोर्ट्स खेलता हूँ जिससे मुझे किसी और की जरूरत ना हो. ठीक है. सो द सेम थिंग गो फॉर जॉब, कि आप जॉब पे भी आपने ये देखना होगा कि फर्स्ट जॉब तो कोई भी मिले ले लें, उसमें नखरे ना करें, लेकिन बाद में जब आप जॉब ढूंढें तो ये ढूंढें कि आपको किस किस्म की जॉब पसंद है. अगर आप मैनेजरल जॉब आपको पसंद नहीं है, मीनिंग कि आप नहीं चाहते कि आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए, तो आई नो समवन इन माय फैमिली, उसको रिसेंटली जॉब प्रमोशन मिली, उसने मना कर दिया. और रीजन पता है उसने क्या दी? कहता है मैं डरता हूं कि मुझे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और मुझसे गलती हो गई तो फिर क्या होगा. यानी ही वाज स्केयर्ड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. फाइन, ही जस्ट थॉट ही वाज नॉट रेडी, ही डिक्लाइंड इट. लोग उसको बुरा भला कहने लगे, तुम्हें पैसे मिलते हैं फलाना फलाना. से कहा नहीं, पैसे के अलावा मुझे स्ट्रेस भी तो मिलता. बड़ा गुड आंसर दैट ही गिव. ऑलराइट. अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बीएस मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, फिर सेमेस्टर में टीचिंग के अलावा कौन सी फील्ड में जा सकता हूँ. देखिए सो मैथमेटिक्स में हमेशा देखिए टीचिंग ऑफ कोर्स एक है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत एरिया है जिसमें आप जा सकते हैं. और आप देखिए फील्ड बहुत ज्यादा अब फलेंगी फूलेंगी और बढ़ेंगी. तो मैथ में आप देखिए मॉडलिंग हो गया. देखिए मशीन लर्निंग के आपने बारे में सुना होगा. मशीन लर्निंग इज नथिंग बट ऑल मैथ. well it is related with that. I'm not going to say completely math, but modeling hai. Model means like different models for not the fashion show modeling. Model means like आपने कोई mathematical model बनाया जैसे हम लोग करते हैं कैंसर के लिए, राइट. तो मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है, but it is based on mathematical models to develop or find like let's say अगर मशीन लर्निंग बनाए तो there will be a model based on that. You will see कि मशीन लर्निंग रन करके करेगा कि इस अब ट्यूमर और स्टार्ट ट्यूमर और इस कैंसर नॉट कैंसर. ठीक है. सो वो बिजनेस में भी होगा, वो साइंस में भी होगा, वो इंजीनियरिंग में भी होगा. इंजीनियरिंग का मतलब है कि विद इन साइंस विद इन you can go a further subdivision. It will even be in forecast. ठीक है. अगर आप मौसम का हाल बताना चाह रहे, उसमें भी
मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज होती है बाय द वे, ऐसा नहीं होता कि आप जस्ट यू जस्ट स्टार्ट एंड स्टार्ट प्रिडिक्टिंग। सो ये सब चीज़ों में आपका होगा खपत, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे आपने अगर मैथ पढ़ी है अंडर ग्रेड में और आप मजीद आगे पढ़ना चाहें तो यू कैन चेंज योर फील्ड, गेट सम मोर एक्सपर्टीज एंड देन कंबाइन इट। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, डाइवर्सिफिकेशन। What is the one of the best thing you can do is diversify your skills। जो कि मैं वर्डिंगली नहीं बोला, वैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल प्रोफेशनल में और स्किल सीखें, बाहर से सीखें, ये सब चीजें मैंने बोल दी हैं, बट इट मींस डाइवर्सिफाई योर स्किल्स, ठीक है। आपने अगर ये कर लिया, अगर आप मैथ के अलावा मशीन लर्निंग में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लेना, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ जॉब्स। सो यू गेट माय पॉइंट कि लुक, रीड अबाउट डिफरेंट जॉब्स। और देखिए सबसे बेस्ट थिंग क्या है, जॉब पढ़ें, ऑन इंटरनेशनली पढ़ा करें कि किस एरिया में जॉब्स की जरूरत है और उनकी स्किल्स क्या मांग रहे हैं वो लोग, ठीक है। अच्छा, how can we so Hafsanur asking how can we contact you for an advice or mentorship? So I मैं अपना email address, WhatsApp, Facebook, I'm okay with any of these. I can share those with you through the organizers, and then you can contact me. And then I can also leave in the chat if that is convenient. Okay. Uzmari asked, could you briefly tell us about research skills? देखिए रिसर्च स्किल्स के अंदर एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको रिसर्च मेथडोलॉजी जरूर आनी चाहिए, ठीक है। When I say research methodology, it means कि आप ये समझिए कि रिसर्च होती क्या है, ठीक है, नंबर वन। सेकेंड, ये बात जहन में रखिए कि अंडर ग्रेड डिग्रीज आर नॉट डिजाइन टू मेक यू साइंटिस्ट। तो कभी इस मखमसे में मत पड़ेगा वो मैंने अंडर ग्रेड कर लिया मुझे रिसर्च नहीं आती, आपको आने भी नहीं चाहिए। आपको अगर रिसर्च पेपर पढ़ना आ जाए ना, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल दैट यू विल लर्न इन अंडर ग्रेड, ठीक है। या प्रेजेंट करना, ये भी एक स्किल है फॉर रिसर्च। या आपको ग्राफ समझना आ जाए। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वन ऑफ द थिंग दैट यू शुड लर्न फ्रॉम नाउ इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये हुआ कि मैं एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर वर्किंग इन अ कैंसर हॉस्पिटल कैन एक्सप्लेन टू यू कि हमने क्या इंप्रूवमेंट लेके आए, और उसके लिए जरूरी क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखाऊंगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या है, ठीक है। सो विद इन रिसर्च यू कैन एंड अगेन learn and watch some videos about research skills, like what is the best way, what are the need and greeds of and nitty gritty stuff for research skill। आप ये सब चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो that will give you a lot of other input as well। Yeah. What is artificial intelligence and what it is, and is it used nowadays in studies? So no, machine learning you can learn, but machine learning will be so common in the next 10 years. Well, you already are using machine. You already have a machine, a smart machine in your hand, your phone. Okay. Machine learning is if you go on Google and search, let's say a song, if you search it, next time the YouTube will give you those songs which were basically relevant to the search that you did. This is machine learning. They learn your pattern. Or if you go online and search stuff, okay? Let's say you search something that you want to shop. Google will then send you emails, or it will start coming on your Facebook. The big thing of the Facebook is sharing the data and all that, meaning they are sharing your searches, and this is how they send you only those relevant ads. This is machine learning. So machine learning is you're basically teaching the machine how to perform tasks, and it will be everywhere. Believe me or not, soon it will be in our houses. It is already in our houses. Smartphone, smartwatch, the cell phone, the smart cell phones, everything is all that. Now you can also use that for predictions. Okay. So again, if the best thing would be watch a YouTube video about machine learning. You will know it, and you will learn a lot. Okay. So yes, I can do that. So that is. So in my opinion, I think we are over the time. I don't want to take too much of our
time of everyone. My WhatsApp. I think Facebook should be this, if I'm not wrong. So yeah, I think that's for Facebook, my email. Okay. It's already more than an hour and a half, so we should stop here. For higher education, I think we can do another one. I do have, of course, slides, and those slides, of course, are all about higher education, how to search a university, how to look for different way of finding opportunities. So it's a lot. So I don't want to spend another 1.5 hours keeping you guys here. It will be too much. Maybe we can do another session some other time, and then it shows you how to basically make a strong application, stay focused, what to do, what not to do about higher education. But I think I purposely spoke about the career counseling first because more student will need this rather than anything else. With that, if there is no question, I can hand it over to Lubna. And in the meanwhile, if there are other questions, you can unmute yourself or write in the chat box. I would be more than happy to answer any other question. Okay, thanks so much, Dr. Ayaz. I think it was a very detailed and thorough session, how to develop skills among the students. And I think you had addressed a lot of questions, and I like the diversity of the questions of the students they asked. And thank you so much for the great talk. In fact, not a talk, it was a training session. So it was our pleasure to have you with us. And I would like to invite now Dr. Ali Hashmi to please give some concluding remarks to this webinar. Assalamu alaikum. Alex, Thank you very much, Dr. Lubna, for giving me a chance to speak up. It was a very good and informative session with the honorable guest, Dr. Ayaz Khan, and he explained things very beautifully about setting the career goals, knowing who we are, and planning how to get to our goals and how to achieve those goals which we set. So I personally enjoyed it, and especially the bit that he's an MRI scientist, and I'm also a student of NMR spectroscopy, which we use in our research. So I believe that all the students, and especially chemistry students, would have also enjoyed the things. And I believe that the students would also take on all the advices and try to apply them in their daily lives. And especially I like the advice that don't just keep collecting the information. Instead, try to read things, try to read other things except your particular field as well. That is actually the need of the day, uh, especially when we go abroad. And I have my personal experience that when I went to New Zealand for PhD, and I saw that their BS honors students are actually much sharper than us. And there are the reasons that they don't just keep collecting the information, rather they are trained to study about different topics, and they have expertise in more than one topic or more than one subject. So that is a very good thing, that students should uh, acquire knowledge, not just the information. So I believe this would be a very informative seminar for the students who are with us today, and they would definitely benefit in planning their higher education and their future goals. Thank you very much, Dr. Saib, for your precious time, and thank you all for your presence. Okay, here we are going to end today's session, and I would like to request Dr. Ayaz Khan, please spare some time for a few more sessions with our students, because I think I'm receiving many of the messages from the students. They are interested to get
some sessions, how to get scholarships abroad, and which subject they want to choose for their higher education. So we request you for some more sessions in future. Sure. Yeah. That would be quite possible. Okay, so thank you all of you for attending this session. Hope you have learned a lot and enjoyed these presentations. And I have already left all the information, that you can contact me. And I'll be more than happy to help if you guys, have any question. Okay, thank you, Dr. All right. Ayaz. Thank Thank you. you all the participants. Allah Hafiz. Lafis, thanks so much.